गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। सी हियर दैट स्टीरियो आइसोमरिज्म इज द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमरिज्म? द कंपाउंड which have isomer which have the same chemical formula but different arrangement of the atom or group in the space, that is called as the stereoisomerism. So जैसे कि वो वाले आइसोमर जिनका स्ट्रक्चर जिनकी फार्मूला सेम है बट उसका अरेंजमेंट एटम्स का और ग्रुप्स का जो उसके साथ लगे हैं उसका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरियोआइसोमरिज्म. फर्स्ट एग्जांपल लेट्स सी लैक्टिक एसिड. तो अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला है CH2OH COOH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है H. दिस इज द लैक्टिक एसिड. तो अगर ये लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड का इस कार्बन, अगर ये कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड की चार बॉन्ड लगे हैं. दिस इज OH है, COOH है, ये H है, ये मिथाइल ग्रुप है. अगर हम कार्बन एटम को पकड़ के बाकियों को इस तरह से रोटेट कर देंगे तो बाय द रोटेशन जो है अरेंजमेंट विल बी द डिफरेंट. If I rotate it at 180 by simply this is C, here is OH and here is the H और यहाँ पे HOOC and ये मिथाइल. Then say कि अगर ये लैक्टिक एसिड जो कंपाउंड है अगर उसके अंदर ये वाले कार्बन को पकड़ के हम उसकी 180 की रोटेशन करते हैं तो therefore we will get this isomer. So अगर ये प्लस, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि whether it is प्लस और माइनस, but this is the isomerism, stereo isomerism, यानी कि जिसके अंदर कंपाउंड का फार्मूला तो सेम है तो इसका भी सेम है, but arrangement of the atom, this is the atom or groups, these are called the groups in this space is now different. पहले ये COOH ग्रुप जो था वो इस कार्बन की राइट साइड में था. अब यहाँ पे इस कार्बन की राइट साइड में कौन आ रहा है? मिथाइल. That would say the arrangement of the atom or the group in the space is different and that is called the stereoisomerism. तो stereoisomerism जो है वो आगे हम डिस्कस कर रखे हैं. There are two types. What is the first one? Is the conformational isomers. अब ये conformational कौन से होते हैं? Conformational isomerisms are the what here? This is the conformational isomers are those isomers in which there are chemical formula जो है कंपाउंड का सेम ही रहता है but arrangement of the atom or group is different when we rotate carbon single bond. Like we have here by the CH3 and here is CH3. So conformational में है कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और अगर हम इसको इस तरह से डेजिग्नेट कर लेते हैं, दिस इज HA, this is HB, this is HC, here is on the side the HA, this is HB and this is HC. और अगर हम इस कार्बन को पकड़ के और दूसरी कार्बन को इस तरह से रोटेट कर दें at one and the 60 degree or more than 60, तो अगर इसकी रोटेशन कर देते हैं तो therefore at the 180 rotation, so what we will get here, it is the C and this will be HA, HB, HC और यहाँ पे HC, यहाँ पे है HB
That would say कि after rotating this carbon single bond, तो ये HA के opposite यहाँ पे कौन आ जाएगा HA. Then would say after rotating at the 180, so these two HA and HA will be opposite to each other. But actually जो compound है तो ethane यहाँ पे CH3 और CH3 है. We have just labeled these hydrogen atom. ये हमने जो हाइड्रोजन एटम को लेबल किया है HA, HB, HC, so that कि हमें रोटेशन से पता चल सके कि we are rotating the hydrogen atom. तो otherwise all the hydrogen atom are identical. But here, in order to understand after the rotation what is the position, we have designated the A, B, C. तो here भी after rotation हमने इस कार्बन को तो पकड़ रखा है, इस कार्बन को फिक्स कर दिया एंड देन इस वाले कार्बन को हमने 180 पे रोटेट किया. जब 180 पे रोटेट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है 180 पे आगे यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर देगा. तो therefore we will get here the same arrangement कंपाउंड है, लेकिन उसका अरेंजमेंट ऑफ द एटम और द ग्रुप्स इन द स्पेस इज द डिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर वी कॉल्ड हियर, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट आर दैट? Next is the geometrical isomerism. Exactly what is the geometrical isomerism? The compound which has the same molecular formula, but इसके अंदर let's see we have here CH3, C double bond. This is the CH3 and here is H and here is H. This is called here cis but 2e. cis का मतलब है कि दोनों मिथाइल जब सेम साइड पे हैं इस कार्बन डबल बॉन्ड की, तो दैट इज कॉल्ड हियर द cis butene. तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में देयर इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द न्यू बॉन्ड. एंड अगर हम इस कंपाउंड को हीट करें तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस पाई बॉन्ड, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कौन सा है पाई. तो पहले बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अगर ब्रेक करेगा देन इट इज फॉलोड बाय द रोटेशन, तो देन रीमेकिंग द बॉन्ड. तो हियर इज CH3 and here is H double bond, here is H and this is CH3. Now see here that what is this? This is called trans but 2e. That means say कि इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का फार्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, but now they are different in the geometry. This is the cis butene, this is the trans. So here this cis can be changed into the trans by breaking or making of the new bond. ये पहले इसके बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेकिंग के बाद ये सिंगल हो जाएगा, then it is rotation, रोटेशन के बाद ये यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा, then pi bond की रीमेकिंग, and this is called here the geometrical isomerism. So there are the two type of the isomerism, that is the conformational and the geometrical isomerism. And the next आ जाता है कि what is the plane polarized light. तो plane polarized light क्या है? इस चैप्टर में सारी आगे डिस्कशन करने से पहले हमें ये बेसिक टर्म पता होनी चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है. सो प्लैरिमीटर की डिस्कशन है जो हम पहले फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? द लाइट विच हैज plane of vibration only in the one direction. Mean to say, let's see
we have a source. This is the source of bulb, or it emit the radiation of the different wavelength. तो अगर ये सोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ emit कर रहा है, and if we place a slit and then it pass through the nickel prism. When it is passed through the nickel prism, so here the lights are going in the direction like this way, and the few light will pass through this. So after passing the light from this nickel prism, तो this जो wavelength है, ये different type of wavelength है, then से ये जो rays emit हो रही है, उसकी wavelength 760 नैनोमीटर हो सकती है, it can be 640 नैनोमीटर हो सकती है, and it can be 620 nanometer. Different type of the wavelength is emitting from the source. If the different type of the wavelength are emitting from the source, when these different wavelengths will pass through this nickel prism, then this light emitting from this, ये जो इसमें से बाहर निकलेगी जो लाइट, उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी. तो आफ्टर ये इनकी वैल्यू डिफरेंट वेवलेंथ आ रही थी इस सोर्स के अंदर से, डिफरेंट वेवलेंथ है. व्हेन इट इज पास थ्रू द सोर्स दिस nickel prism, then we will get only single wavelength. Then these are not three value are here, but यहाँ पे किसी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट है. दैट वुड से अगर वो जो सिंगल वेवलेंथ यहाँ से बाहर निकल रही है, दैट इज सिंगल वेवलेंथ. And that light is called as the plane polarized light. The light which has a plane of vibration only in the one direction, that is called as the plane polarized light. And अब आ जाता है कि ये तो plane polarized light है, तो इसके बाद आ जाता है कि what is the optical activity. So what is the optical activity? Let's see that we will discuss here. Optical activity. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं. सो व्हाट आर द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? द सब्सटेंस, ये वाले ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? which rotate the plane polarized light to a certain angle. That is, we will discuss here the what is the angle of rotation. Angle of rotation क्या होता है कि जब कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को किसी एंगल के ऊपर रोटेट कर दे, तो दैट इज कॉल्ड हियर दी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस. तो लाइक शुगर, हियर इज द शुगर and sucrose and dextrose, these are the optical active substance. अगर हम इसका सोल्यूशन बना लें और उसकी पोलैरिमीटर के अंदर हम पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है which is used to find out the angle of rotation of the optical active substance. तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस अगर इनमें से कोई एक ले लिया जाए, तो उसको जब हम शुगर में वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो आफ्टर डिसॉल्विंग दिस मेक द 20% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन एंड देन नो द एंगल ऑफ रोटेशन. तो इट विल रोटेट द दिस लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद अ सर्टेन एंगल. दैट मीन टू से कि वो वाले सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ एंगल के ऊपर रोटेट करते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस. एंड
the activity is called as optical activity. दैट मीन टू से कि वो वाले सब्सटेंस जो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर्टेन एंगल के ऊपर रोटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एंड जो उसका फेनोमेना है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो दिस इज द शुगर, दिस इज द सुक्रोज, डेक्सट्रोज, lactose. There are so many optical active substances are there to which rotate the plane polarized light with a certain angle. Before moving the forward, we will discuss the one thing is here, that is what are the dextro rotatory substance. What are dextrorotatory substance कौन से होते हैं? The dextrorotatory substance कौन से होते हैं? The substance which rotate the plane polarized light to the right direction, that is called as the dextrorotatory substance. That means to say कि वो वाली optical active substance ये वाली जैसे शुगर है, सुक्रोज है, डेक्सट्रोज है, altrose है, there are many optical active substances are present. So which rotate this plane polarized light, which we have already discussed, which rotate the plane polarized light to the right, that is called as dextrorotatory substance. In that case, we denote it as plus, or it is also denoted by here R. This is it is denoted by the D stand for the dextrorotatory. It is D stand for the dextrorotatory. Next is the what is the levorotatory substance. अब levorotatory substance कौन से होते हैं? The substance जो optical active substance, वो वाले optical active substance which rotate plane polarized light to the left direction. So the optical active substance वो भी इनमें से ही कोई हो सकता है। Optical active substance which rotate the plane polarized light to the left, that is called here the levorotatory substance. In that case, we denote it by its minus sign and it's written as here the L. That is the levorotatory stand here. This is the L, this is G, this is plus is from the dextrorotatory, and the levorotatory stand for the minus. So these are the various kind of the terms which we will discuss in this chapter. Next आ जाता है कि जो इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन आ जाती है, दैट इज व्हाट हियर, व्हाट इज द कॉरैलिटी। कॉरैलिटी किससे कहते हैं? सो कॉरैलिटी इज एन फेनोमेना जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड जैसे it's like that we will simply discuss here P is here. P एक वर्ड है और अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन देखें तो it seem to be look like this one. तो which is not superimposable on its mirror image. और अगर मैं इस P को पकड़ के इस P के ऊपर रख दूं तो वो सुपरइम्पोजेबल नहीं है। लाइक दैट कि अगर ये P इस तरह से दिख रही है ये वाली और इसके ऊपर ये P तो इस तरह से आएगी, दैट वुड से कि दैट इज नॉट सुपरइम्पोजेबल। तो वो वाले सब्सटेंस जिसके जो पॉलीआइसोमर्स हैं which is not superimposable on its mirror image, that is called as the chiral substance. वो वाले substance जिसकी that substance we will discuss that, we are just discussing here an alphabet here. तो जब वो वाले substance जो है which is not superimposable on its mirror image, that is called as the chiral substance, and
property is called as the chirality. So this is the chirality. दूसरा है, अगर हमारे पास ये m है और दिस इज m इसके, तो अगर हमने इस m को इस शीशे में से देखेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम दिखती है। दैट मीन टू से कि इफ आई इस m को उठा के मैं अगर इसके ऊपर रख दूं तो दे एग्जैक्टली सुपरइम्पोज, अगर वो सुपरइम्पोज कर जाते हैं, दैट मीन टू से दिस m इज हियर और इस m को मैंने इस m के ऊपर रख दिया, तो दैट मीन एग्जैक्टली आई नो दैट मीन टू से दैट इज सुपरइम्पोजेबल ऑन इट and that is called e-chiral. Then its property is called here e-chiral. This is the chiral, this is the e-chiral. Similarly, if we have a substance like this one, ये image है, like 0 है या O है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है दैट इज सुपरइम्पोजेबल है, अगर ये सुपरइम्पोजेबल है ऑन इट्स मिरर इमेज, देन इट इज कॉल्ड हियर इज कॉल्ड व्हाट हियर e-chiral property एंड दैट इज कॉल्ड हैज द e-chiral सब्सटेंस। इसी तरह से हम उस सब्सटेंस की डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में कि वो वाले सब्सटेंस जो अपनी इमेज के साथ सुपरइम्पोज कर जाते हैं, अगर वो सुपरइम्पोज कर देते हैं दैट इज e-chiral, और जो नहीं करते दैट इज कॉल्ड chiral. The property is called as a chirality. Similarly, you know that अगर हम chirality की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखी है. We take here example this one A. So in that case ये वाला जो है, sorry, this is the here A and C. ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है. सो दिस ए की ये जो इमेज है, अगर हम इस इमेज के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दें तो दैट इज एग्जैक्टली सुपरइम्पोजिंग. दैट मीन टू से कि वो वाली सब्सटेंस जो एग्जैक्टली सुपरइम्पोज हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड हियर e-chiral substance. So this is the one of the term is chiral and e-chiral atoms are what here. So next is the next topic है इसके बाद what is called asymmetric carbon. Next is the asymmetric carbon atom. अब asymmetric carbon atom क्या होता है? The carbon कंपाउंड, वो वाला कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और चारों के चारों डिफरेंट है. दैट मीन से इफ वी हैव हियर C, here is OH, here is the COOH, here is H and this is the methyl. And ये वाली जो कार्बन है, this carbon is what here? Asymmetric carbon. This is called asymmetric carbon atom and it is represented by the star. That is, यहाँ पे हम इसकी streak डाल देते हैं कि this is the carbon which is called by asymmetric carbon atom. The carbon जिसके अंदर 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और चारों के चारों डिफरेंट हैं, that is called here asymmetric carbon atom. So this is the very good example is here lactic acid. Similarly, one more example is here. This is the C, this is F, this is the H, and we can see that here is Bro, and this is the chloro, and this is H. So please see that here. This is the bromo, chloro, fluoro, methane. This is here. इसके साथ ये जो कार्बन एटम है वो कौन सी कार्बन एटम है? एसिमेट्रिक
कार्बन एटम। दैट मीन्स एक वाली कार्बन जिसके साथ चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे हों, चारों एटम्स डिफरेंट लगे हों, दैट इज कॉल्ड हियर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ भी इसका नाम क्या है, व्हिच इज द ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन, बिकॉज एक ही कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हियर द ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन, तो which has the four different atom and that is called here the asymmetric carbon atom. So and now this there are more example are given here, like C is here and we have here C2H5 and here is H and this is the CH3 and one of the example is here Cl. So see here that this carbon atom इसके साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन एटम, मीथेन and this will be methyl and this will be ethyl group. So this is called here methyl, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथाइल, ये क्लोरो और ये हाइड्रोजन। तो ऑल द कार्बन, ऑल दी जो ये ग्रुप्स हैं, ये एटम्स हैं, तो ऑल दी ग्रुप्स एटम्स जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑल आर द डिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो सी हियर दैट कि अगर हम इसकी डिस्कशन कर लें तो दिस इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज देयर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, व्हाट आर दैट इज हियर, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ symmetry. This is the first element of symmetry, is called the plane of symmetry. What is this? Exactly the plane which divide the molecule into the two equal parts. That is called here plane of symmetry. Like if we have this is an object, और अगर हम एक लाइन को पास करें which bisect this object into the two equal part, that is called as the plane of symmetry. Then we see कि इसका one half जो है, one half is on this side and one half is on this side, and that is called as the plane of symmetry. And see, for an example of that is we have here CH3 and here is OH and here is OH. So this is the this is the CH3 or this is the C, here is Cl, here is H, this is the CH3 and this is the CH3. Then what to say कि अगर ये इसका नाम क्या है, 2-chloro-propane, its compound name is the 2-chloro-propane. It will be 2-chloro-propane. अगर हम इस कंपाउंड मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे प्लेन रखें तो प्लेन विल डिवाइड दिस मॉलिक्यूल into the two equal part. That is the one methyl is on this side and one methyl is on that side. That means to say कि इस कंपाउंड के अंदर जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. So that is called the plane of symmetry. And similarly, if we have here C, here is the COH, here is the H, and here is the CH3.
here is CWH, here is H, and this CH3. If we bisect this molecule, so therefore the one half of molecules is on this side and this is on the second side. So that means to say the plane which divide the molecule into the two equal part, that is called as the plane of symmetry. So this is the plane of symmetry here in this molecule and on this molecule. Similarly, there is one more example is CWH, and here is H, here is OH, CWH, here is H, and here is OH, and this is called the tartaric acid. In this, the plane divide the molecule into the two equal different parts, and that is called a plane of symmetry. So this is the different examples of the plane of symmetry. And next is what is center of symmetry? Next element is called the center of symmetry. So what is the center of symmetry? Let me have an example of this is the CWH, and this goes here is H, and here is OH, and here is HOOC, here is H, and here is OH. अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इस मॉलिक्यूल के इस सेंटर के पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से, if all the substituent, this is 1 2 3 4 5 6, the 6 different जो substituent लगे हैं वो इस सेंटर पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस पे है. लेट्स सी कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो this one, ये वाला, this one, and this one. All the atoms are lying at the equal distance from the center of the molecule. That is called here the center of symmetry. So if all the substituent जो है वो बिल्कुल equal distance पे lie कर रहे हैं, then it is called here the center of symmetry. अगला टॉपिक है जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, थर्ड इज द अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो दिस इज द अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या होता है कि सपोज आप एक कंपाउंड की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और जो रिफ्लेक्शन जो है वो उसकी सुपरइम्पोजेबल नहीं हो रही है, then we have to sort out the any other way. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि उस जो मॉलिक्यूल है उसकी पहले रोटेशन कर देते हैं, एंड रोटेशन इज फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन. एंड इफ अगर मॉलिक्यूल की पहले उस ऑब्जेक्ट की मॉलिक्यूल की अगर रोटेशन की जाए एट द सर्टेन एंगल 360 by n, and then it is followed by the reflection, and then the जो image बनेगी that exactly match with the parent molecule, and that is called here the alternate axis of symmetry. In order to understand this, the one of the example is given here. Let's see, we have here it is like this way. Here is the Z positive, here is H, and here is the H, Z negative, and there is the
Z positive H, and here will be H and Z negative. So फर्स्टली अगर हम इसकी रोटेशन कर देते हैं, रोटेशन एट द सर्टेन एंगल, तो आफ्टर द रोटेशन अगर हम इसकी रोटेशन 60 डिग्री पे करते हैं तो ये वाला Z पॉजिटिव H है और यहाँ पे ये Z पॉजिटिव और H नेगेटिव इस जगह पे चले जाएंगे, तो वो मैंने Z पॉजिटिव जो है यहाँ लिख दिया, H यहाँ लिख दिया। इसकी सेंटर पॉइंट पे, इसके सेंटर पॉइंट के हमने ऐसे इसको रोटेट किया है, तो अगर इसको रोटेशन इस तरह से जाएगी तो फिर ये इधर चला जाएगा, दैट से Z पॉजिटिव इधर आ गया, H इधर आ गया, और जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे चले गए। तो therefore here is the H and Z negative, ये जो था वो यहाँ पे आ गया, एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पे था वो इधर चला गया। तो here is the Z positive, here is the H, और ये यहाँ पे था वो ऊपर चला जाएगा, here is the H and here is the Z negative. After the rotation we will get this one, कि जो ये वाली पोजीशन थी वो यहाँ पे चलेगी, and this one यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, and this one go on this direction. And अब हम इसकी जब रिफ्लेक्शन देखेंगे, and here is a plane, तो प्लेन में जब इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे it is visible here. So after that what you will see here that, so here is the exactly we should make on that. And it will be exactly matched to that one. Z1, here is the H, here is the H, and here is the Z negative, and here is the Z positive, and here is the H, here is the H and Z negative. That means to say इस कंपाउंड की जो रिफ्लेक्शन है वो ये दिख रही है। अगर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इज फॉलोड बाय द रोटेशन देन रिफ्लेक्शन, और दिस मॉलिक्यूल, दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल इज एग्जैक्टली मैच्ड टू इट्स पेरेंट फॉर्म, and that is called as the alternate axis of symmetry. That is कि अगर हम इसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, जब इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो this is exactly matching to this pairing form, that is called here the alternate axis of the symmetry. So this is the different type of the symmetry element which are present in the different compounds.